Okay, good morning, everyone. Welcome to the Speedlabs live classes for CBSE 10. हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में एसिड, बेस और सॉल्ट ये CBSE 10 का टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट किया था और हम लोग ने डिस्कस किए थे सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। फिर मुझे थोड़े बहुत कमेंट्स आ गए थे कि जिन लोग ने लेट ज्वाइन किया था वो लोग के लिए कि सर एक बार फिर से रिवाइज कर लो। So for those students, I'm just quickly revising what we have done in that class. क्या क्या हम लोग ने exactly पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि एसिड के बारे में। एसिड्स के बारे में अगर हम लोग ने पढ़ा था कि एसिड, मैंने बोला था टेस्ट के रिलेटेड, एसिड हैज substances that have test SAR. तो देखो एसिड substance that test SAR. Okay, so the test of acid is SAR. So there are many substances that contain acid, and so the test is SAR. Example you can take, that is lemon, curd, pickle, orange juice है, vinegar है। ये examples अगर हम लोग देखेंगे तो इनका टेस्ट तुम्हें पता है, इनका टेस्ट कैसे होता है, सार टेस्ट होता है। देखो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक बताया है और मैंने बेस बताया था कि एग्जांपल मैंने देखा था लास्ट टाइम दिया था बेकिंग सोडा का या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनका टेस्ट कैसे होता है, बिटर। तो मैंने बोला था कि जब भी बेकिंग सोडा हम लोग केक बनाते समय या ढोकला बनाते समय अगर उसमें डाल देते हैं तो इट टेस्ट बिटर। अगर ज्यादा हो गया तो उसका टेस्ट बिटर आ जाएगा। बेकिंग सोडा हो, वॉशिंग सोडा हो, सोप भी देखो, if you test it you will feel some bitter taste. So one of the important point for acid substance that test sour or base, the substance are bitter in nature. Okay, तो ये हम लोग ने देखा था। I hope it's cleared with you. Okay, so important points हम लोग को देखना है कि ओके तो देखो यहाँ पे अगर मैंने मेंशन किए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। एसिड्स सारिन टेस्ट, इसका टेस्ट खट्टा होता है। फिर मैंने लिटमस टेस्ट बताया था, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, टर्न्स द सॉल्यूशन ऑफ चाइना रोज एक होता है, चाइना रोज का कलर डार्क पिंक हो जाता है जिसको मजेंटा कलर बोलते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस में देखा था, दे आर बिटर इन टेस्ट, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, फिर चाइना रोज का कलर ग्रीन हो जाता है, and even the turmeric paper also turns into the red. So ये test samples बताए गए कि these are the testing methods, you can test it by using these methods. इसके अलावा मैंने बोला था कि आपको there are certain acids जो organic और मैंने बोला था inorganic acids होते हैं। Organic acids are the acids which are obtained from plants and animals. तो ऐसे एसिड्स हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इजीली, लाइक लैब टेस्ट से लेमन जूस है या सिट्रस फ्रूट्स है। बट देयर आर इनऑर्गेनिक एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये टेस्ट तो हम लोग नहीं कर सकते इजीली, राइट। तो इसके लिए हम लोग को लेबोरेटरी प्रिपरेशंस जब भी हम लोग करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, we need to test by using either litmus paper test और फिर pH स्केल एक है। इसके अलावा indicators, some indicators are there, okay, वो यूज कर सकते हैं। Here I have mentioned you some examples, important examples of acids and bases. Citric acid,
जो लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है, स्वीट लाइम जूस आप लोगों ने पिया रहेगा उसमें भी यूज होता है। ये पॉइंट्स। फिर टार्टरिक एसिड, टमारिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो जो कच्चे मैंगो होते हैं उसमें होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? योगर्ट में होता है, बटर मिल्क, छाछ में होता है। विनेगर अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें एसिटिक एसिड होता है। फिर एंड स्ट्रिंग या एंड बाइट होता है, देखो तो फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है, फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ से मिलता है हम लोग को? सिट्रस फ्रूट से। फिर कैबेज से भी मिलता है विटामिन सी। बेसिस में कौन से होते हैं? मैंने बोला था बेसिस के लिए हाइड्रोक्साइड होता है, तो लाइम वाटर दैट इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉस्टिक पोटैश यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। फिर इसके अलावा और एक दिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो हाउस होल्ड एंड ग्लास क्लीनर्स में भी यूज होते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ सोर्सेस पूछते हैं और उसमें आपको बताना है कि कौन से एसिड्स। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेल। Okay, so please note down this for 2 minutes. Then we'll continue. अलग अलग एसिड्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से सोर्स, उसके सोर्सेज क्या है। Okay, so now we'll move towards the next topic, that is मैंने पीएच स्केल जब भी पढ़ाया था कल लास्ट क्लास, तभी मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं, कोई एसिड्स को वीक एसिड्स बोलते हैं, कोई एसिड्स को स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, कोई एसिड्स को वीक बेस बोलते हैं। तो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। तो एग्जैक्टली ये स्ट्रेंथ होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। एसिड्स व्हेन डिसोसिएट्स इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन आयंस मतलब क्या होता है? H+ आयंस। तो समझो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो मैंने यहाँ पे बताया रिएक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स डिसोसिएट कैसे होगा? H+ और Cl-। एसिड में H होता ही है, राइट? Strong acid gives more H+ ions than weak acids, and strong acids are more corrosive than weak acids. तो strong acid देखो HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड्स कौन से हैं? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड आर दी वीक एसिड्स। तो ये पीएच का रेंज उसके हिसाब से दिखाएंगे बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रेंथ ऑफ बेस कैसे पता चलेगा? स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बेस डिसोसिएट होगा, एसिड डिसोसिएट होगा तो H+ आयंस मिलता है, बेस डिसोसिएट होगा तो OH- आयंस। तो OH- आयंस अगर डिसोसिएट होंगे तो क्या मिलेगा? बेस डिसोसिएट्स टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड OH-। तो NaOH is a base. How it will give Na+ OH-, right? And strong base dissociates completely while weak base dissociates partially. और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड्स अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। देखो all these all hydroxides contains the OH- ions, hence they are bases, क्योंकि बेस का प्रॉपर्टी है ना हाइड्रोक्साइड, और एसिड में हाइड्रोजन होता है। ओके, तो ये स्ट्रेंथ आप पीएच स्केल से बता सकते हैं, और ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं और वीक एसिड्स कौन से। ओके, नाउ मैंने बताया था कि सपोज देयर आर सम एग्जांपल जो हम लोग को टेस्ट कैसे कर सकते हैं।
जिसे हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इफ विल सी द डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स, यहाँ पे special type of substance that are used to test whether a substance is acidic or base। अगर सब्सटेंस एसिड है कि बेस है ये पता करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड, और वो सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो ये इंडिकेटर क्या करते हैं, दे इंडिकेटर चेंज देयर कलर्स इन एसिडिक when they are added to the solution containing an acid or a base। okay, so बेसिकली टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स दो टाइप्स ऑफ होते हैं, एक तो नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या, मैनमेड और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस से होते हैं। सो इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस called as natural indicators, and those who are obtained from man-made और laboratory synthesis होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, तो नेचुरल indicators are obtained from naturally occurring substances are called natural indicators। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, लिटमस होता है, टर्मरिक होता है, चाइना रोज। देखो मैंने ऑलरेडी ये एग्जांपल्स आपको बताए हुए हैं, इनको नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल जो लेबोरेटरी प्रिपरेशंस होते हैं उसमें एक फिनोल्फ्थालीन आता है लिक्विड, मिथाइल ऑरेंज आता है, ऐसे इंडिकेटर्स जो लेबोरेटरी में आप लोग देख सकते हैं। ओके, ऐसे इंडिकेटर्स कॉल्ड एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो नेचुरल इंडिकेटर्स है उसमें से लिटमस। कल ही मैंने बताया था if we'll talk about the litmus, you know that this litmus are extracted from the light chains, right? Now like litmus is the purple color liquid in distilled water, लाइकेन्स बोलते हैं, उससे से लिटमस पेपर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ दिस लिटमस इज अ पर्पल कलर लिक्विड होता है इन डिस्टिल्ड वाटर, एंड दिस लिटमस कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स of the two colors. One is called blue litmus paper and another is called as red litmus paper. Laboratory में if we'll go now, if we'll see the different types of litmus papers, two different litmus papers, one is called red and one is called blue. देखो डायग्रामेटिकली यहाँ पे मैंने बताया है। अभी मैंने कल भी बताया था आपको ये कि अगर कोई भी एसिड सॉल्यूशन में अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं, इट टर्न्स इनटू दी रेड। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट डायग्राम मैंने बताया, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, सी दिस वन। देखो ये ब्लू लिटमस पेपर मैंने डिप किया है, इट टर्न्स इनटू द रेड, एंड बेस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, दीज आर द बेस सब्सटेंस। अगर मैं इसमें रेड लिटमस पेपर डिप करता हूँ, इट टर्न्स इनटू दी ब्लू। तो ये कलर चेंज पता होना चाहिए आपको। लिटमस पेपर के केस में ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड, रेड कलर में होता है व्हेन डिप इन एसिडिक सॉल्यूशन, एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू व्हेन डिप इन बेसिक सॉल्यूशंस। ये दो कलर चेंज, एंड लिटमस पेपर कम्स अंडर नेचुरल इंडिकेटर। इसके अलावा हम लोग को देखना है टर्मरिक। ओके, नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक तो तुम्हें पता रहेगा, टर्मरिक हल्दी, टर्मरिक यूज्ड एज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। दिस टर्मरिक इज ऑफ येलो कलर, पता रहेगा आप लोग को। दिस टर्मरिक पेपर टर्न्स इनटू रेड व्हेन इट इज डिप्ड इन द बेसिक सॉल्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो टर्मरिक पेपर टर्न्स रेड when it is dipped in basic solution. Okay, turmeric paper कैसे बनाएंगे, it is extracted from the turmeric. Okay, और आपको देखो मैंने यहाँ पे बताया बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड होता है, और एसिडिक में डालोगे तो आपको it remains as a yellow।
क्या कलर चेंज होगा टर्मरिक पेपर का? अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो उसका कलर इट रिमेन्स येलो ओनली, बट अगर हम लोग उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा? रेड होगा। उसके अलावा होता है नेक्स्ट चाइना रोज। चाइना रोज इज वन काइंड ऑफ रोज दैट इज ऑल्सो द नेचुरली ऑकरिंग, सो इसको नेचुरल इंडिकेटर ही बोलेंगे। ये चाइना रोज क्या होगा? इट सॉल्यूशन गिव्स डार्क पिंक, जिसको मैजेंटा कलर बोलते हैं, व्हेन इन एसिड एंड ग्रीन इन बेस। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, यहाँ पे सी दिस वन, ओके देखो टेस्ट ट्यूब आपको यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब दिख रहे हैं। एक में मैंने एसिड डाला है, एक में वो चाइना रोज का एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूशन है, और एक में मैंने बेस सॉल्यूशन डाला है। और अगर ये जो इंडिकेटर है चाइना रोज का लिक्विड, अगर हम लोग पोर करते हैं एसिड में, देन इट टर्न्स इनटू द डार्क पिंक, जिसको मैजेंटा कलर बोलते हैं। और अगर ये बेस में डालते हैं तो इसको बोलते हैं, उसका कलर चेंजेस टू ग्रीन कलर। So, see, these are the natural indicators used to identify whether the given liquid is acid or base, or given the chemical is acid or base, because we can't test it, right? Like it is a SAR test or bitter set. So we have to use the natural indicators as well as the synthetic indicators. The natural indicators अभी तक हम लोग ने देखे, there are 3 types of natural indicators. One is called litmus, another is turmeric, and the next one is China rose. अभी हम लोग मूव करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तरफ। नाउ इफ यू लुक एट द सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फर्स्ट इज phenolphthalein indicator. Now phenolphthalein, it is prepared by dissolving solid colorless crystals of phenolphthalein. लेबोरेटरी में आप देख सकते हो ये phenolphthalein इंडिकेटर्स प्रिपेयर करते हैं। phenolphthalein के क्रिस्टल्स होते हैं जो अल्कोहल एंड वाटर में प्रॉपर प्रोपोर्शंस में मिक्स किए जाते हैं, एंड यू विल गेट वन solution, liquid solution, that is called as phenolphthalein solution. Now ये phenolphthalein solution in acidic solution it remains colorless. Acid solution में आप डाल दो इसके drops तो it remains colorless. HCl में डाल दो, sulfuric acid में डाल दो तो it remains colorless. But in basic solution it turns into the bright pink color. सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर आप लोग phenolphthalein ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हो तो उसका कलर कलरलेस टू पिंक कलर हो जाता है, तो आप यू कैन आइडेंटिफाई दैट इज बेस। एंड अनदर वन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो कल बताया था मैंने, पीएच स्केल होता है, इट शोज अ सीरीज ऑफ कलर चेंज। तो देखो आपको राइट हैंड साइड पे एक डायग्राम बताया गया है 0 to 14 स्केल। मैंने बोला था वाटर इज न्यूट्रल, राइट? तो न्यूट्रल 7 वैल्यू दिखाता है, देयर विल बी नो न्यूट्रल। Colors from yellow to red indicate that the solution is acid, red being the strongest acid. मैंने बोला था 0 से 7 तक एसिड होता है एंड 7 से 14 तक मतलब 8 ऑनवर्ड्स इट इज अ बेस। तो जो डार्क रेड कलर दिख रहा है आप लोग को 0.0 पे, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और फिर ये स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाता है। फिर न्यूट्रल आएगा 7 के ऊपर, and from light blue to dark blue, that is indicates the basic, और जो dark blue रहेगा तो that is called as strongest base। तो basic character क्या हो रहा है? it increases, and the green color which is shown in this pH scale indicates the solution is neutral. Okay, so that is also the another type of synthetic indicator called as universal indicator. Universal indicator
colors from yellow to red indicates that a solution is acidic, red being strongest acid, and colors from light blue to dark blue indicates that is the solution is basic. So dark blue being the strongest base. और green color क्या होगा? Green color indicates the solution is neutral. ओके तो हम लोग ने अभी तक 3 नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े और 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़े. सिंथेटिक नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस पेपर, चाइना रोज एक था एंड टर्मरिक पेपर था. और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, फिनोल्फिलिन इंडिकेटर्स, ये these are the synthetic, these are made in the laboratory. So I hope it's clear with you the 2 important concepts of the indicators. Now we need to discuss about one concept called as neutralization. Now what is neutralization? देखो कभी कभी हम लोग को एसिडिटी हो जाता है ना स्टमक. Yes, then doctor advise us to take some liquids or like drink buttermilk, drink more water. Sometimes he suggests us to take the tablet or the syrups. So generally जेलुसिल वगैरह हम लोग को सिरप दिया जाता है, राइट? तो सबसे पहले बताओ मुझे एसिडिटी क्या होता है. एसिडिटी मतलब देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनसाइड द स्टमक. अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगा तो उसको सप्रेस करना जरूरी है, एंड we need to suppress it by using the base solution or the basic solution. So generally doctor advised us to take the gelusil syrup. तो gelusil syrup में क्या होता है? There is a base, means OH minus ions liquid solutions present. So here the acid is suppressed by the action of base. Means acid reacts with the base to give the salt and the water. So when the solution of acid is mixed with the solution of base, both of them neutralize each other and form the salt and water. So when any acid, you will see the acid, you can take any example of acid. You will see here in this chemical reactions I have mentioned, when any acid reacts with the base, it will give salt and water. Obviously it is involved, so it is the exothermic reaction too. So neutral solution, तो अभी मैंने pH स्केल जब हम लोग पढ़े थे तो pH स्केल में बताया था मैंने कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH वैल्यू कितना होता है 7. So solution formed by mixing solution of acid and base is neither acid nor base. ना ही वो acid होता है ना ही वो base होता है. That is called as neutral. Okay, so it is neither acid nor base. It is called as neutral solution. ओके तो अगर कोई भी एसिड ले लो, समझो मैंने लिया एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फॉर्मूला क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? HCl. सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो बेस, फॉर्मूला इज NaOH. व्हेन दिस एसिड रिएक्ट्स विद द बेस, HCl reacts with the NaOH, it will give you what? Salt and water. तो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का आपको सॉल्ट मिलेगा सोडियम क्लोराइड, एंड OH of NaOH, OH of sodium hydroxide reacts with this H of hydrochloric acid and gives it to water body. तो तुम्हें रिएक्शन क्या मिलेगा? NaOH plus HCl gives you NaCl plus H2. Right? So this is the neutralization reaction. एक चीज याद रखना है, neutralization reaction, and when acid reacts with the base, it gives you the salt and the water. Okay, so far we have discussed acid क्या होता है, base क्या होता है, what are the characteristic properties of acids, what are the characteristic properties of base, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. डिस्टिंग्विश आता है कई बार एसिड्स एंड बेस में. इसके अलावा हम लोग ने देखा था टेस्टिंग of acid and base by using the different indicators. So indicators क्या होता है? It is one kind of substance. एक substance ऐसे होता है कि जो हम लोग को वो solution acid है कि base उसमें help करता है. Okay? फिर हम लोग ने देखा there are 2 types of indicators, natural indicators and synthetic indicators.
नेचुरल मीन्स व्हाट, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, जैसे लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और लिटमस पेपर, टर्मरिक जो हल्दी होता है उससे टर्मरिक से टर्मरिक पेपर्स बनाते हैं। फिर वन काइंड ऑफ रोज दैट इज चाइना रोज। एंड इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स दो होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी। तो लैबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड होते हैं इंडिकेटर्स दो, जो पीएच स्केल से हम लोग बता सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बोलते हैं एंड फिनोल्फेन, मतलब फिनोल्फेनिक क्रिस्टल्स व्हेन मिक्स्ड विद द अल्कोहल एंड वाटर इन अ प्रॉपर रेशियो विल गिव यू दिस इंडिकेटर्स। इसके बाद हम लोग ने पीएच स्केल जब ये पढ़े थे तभी मैंने बताया था पीएच स्केल में कि वाटर इज द न्यूट्रल। तो ये 7 जो ग्रीन कलर में बताया था, देखो तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो व्हेन सॉल्यूशन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ base, both of them neutralize each other and form the salt and water. Okay, so reactions देखो मैंने यहाँ पे बताया, so if you want to note down just please note down sodium hydroxide and hydrochloric acid. Just quickly note down. Just quickly note down and then we'll continue further. Okay, so now we'll discuss about the uses of some salts. Now, if we talk about the some salts, okay. So uses of some salts. There are, I have given you some salt जो neutralization reaction से बने हुए हैं. So if you look at here, there will be sodium chloride, which is used as a common salt. तुम्हें पता है used in food to import the taste as a preservative. Sodium carbonate washing soda to soften the hard water. सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तुम्हें पता रहेगा ब्रेड, केक्स, ढोकला वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं बेकिंग सोडा. कॉपर सल्फेट, तुम्हें पता है कॉपर सल्फेट यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड एंड एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट. सो ऑल दीज एग्जांपल्स व्हिच आई हैव गिवन यू, जो सॉल्ट के एग्जांपल्स है ना, इसका यूज पर्टिकुलरली कहाँ पे तो है. तो एग्जाम में अगर वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं 1 मार्क क्वेश्चन, गिव द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द फॉलोइंग. तो सोडियम क्लोराइड का पूछेंगे तो तुम्हें पता है कॉमन सॉल्ट करके है, फूड में यूज करते हैं
हाउस होल्ड आइटम करके एज टू इम्पोर्ट टेस्ट एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं, जो मीट या फिश वगैरह है उनको प्रिजर्व करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट तुम्हें पता है हार्ड वाटर सॉफ्ट बनाने के लिए वॉशिंग सोडा हम लोग यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, जो मोस्टली जो बेक ब्रेड्स एंड केक्स फ्लफी होने के लिए यूज होता है। कॉपर सल्फेट is used as an insecticide and as a laboratory reagent. ओके अभी हम लोग ने जस्ट मैंने आपको बताया कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन और व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इसके कई एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में आते हैं न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल। ओके सो न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिडिटी एंड इंडाइजेशन, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था देखो आपको ये वाला एसिडिटी एंड इंडाइजेशन, और इसके बाद हम लोग देखेंगे एंड स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट। ओके तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिडिटी एंड इंडाइजेशन। ओके नाउ इफ यू लुक एट हियर द एसिडिटी, you know that our stomach contains hydrochloric acid which aids in digestion of food. तो कभी कभी क्या होता है स्टमक में एसिडिटी होता है, एसिडिटी क्यों होता है? एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग को रिलीव करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो मोस्टली जो टैबलेट्स और द सिरप्स आते हैं ना, पैन 40 टैबलेट करके एक है, और यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ जेलुसिल, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स भी होता है एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स भी होता है, राइट। सो दीस सब्सटेंसेस व्हिच suppress the production of acid are called as antacids. Okay, जनरली फ्रूट सॉल्ट देखो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट वाले सोडा या इनो वगैरह हम लोग इनटेक करते हैं, राइट, टू न्यूट्रलाइज दिस एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ एसिड इनसाइड द स्टमक। और उसके वजह से क्या होता है इनडाइजेशन भी होने लगता है। तो टू अवॉइड दिस वी हैव टू यूज सम बेस सॉल्यूशंस लाइक जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, जेलुसिल, एंटासिड्स टैबलेट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा है नेक्स्ट वन इज एंड स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग और द बी स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, बी स्ट्रिंग which contains methanoic acid. Methanoic acid का another name is formic acid. Formic acid का अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो लिख लो, it is HCOOH, formic acid, HCOOH. Now this formic acid or called as methanoic acid, ये एंड स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग बाइट करने के वजह से होता है। When this bee or the ant inject formic acid into our skin while beating, इसके वजह से क्या होता है वो जो स्किन होता है वो इन्फेक्टेड होता है, राइट। देयर विल बी सम इन्फेक्शन एंड इसके वजह से थोड़ा बर्निंग ईचिंग स्टार्ट होता है। एंड टू रिलीव फ्रॉम दिस वी नीड टू यूज द बेस, क्योंकि वो एसिड है तो उसका एक्शन अगर हमें सप्रेस करना है देन वी नीड टू ऐड सम एसिड्स, सॉरी सम बेसिस। तो ये बेसिस कौन सा है? हम लोग बेकिंग सोडा रब कर सकते हैं, या जनरली देखो डॉक्टर एडवाइज अस टू यूज द कैलामाइन लोशन। यस, तो कैलामाइन लोशन में क्या होता है जिंक कार्बोनेट होता है, ओके, दैट इज द बेस। तो अगर हम लोग इफ विल ऐड दिस बेस देन ऑब्वियसली द action will be suppressed and it gives relief as these both bases neutralize this formation of formic acid. Okay, तो देखो now you observe जब भी ऐसे hand bite या bee bite अगर करता है तो हम लोग का जो स्किन होता है and like तो उसके ऊपर जनरली डॉक्टर एडवाइजर्स टू यूज द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स द जिंक कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या उसके ऊपर अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट डायरेक्टली लगा देंगे तो भी वो एक्शन सप्रेस होता है। मींस यहाँ पे भी देखो आप ये जो एग्जांपल्स बताए गए हैं इन एवरीडे लाइफ, इसमें क्या होता है एसिड का एक्शन क्या हो रहा है सप्रेस हो रहा है बाय एडिशन ऑफ बेस। सो हियर आल्सो एसिड रिएक्ट्स विद द बेस गिव्स यू द सॉल्ट एंड द वाटर। ओके, सो दीज आर द टू एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ के हिसाब से यू जस्ट एक्सप्लेन द
why we are using the calamine lotion when the ant sting bite और bee bite होता है तभी, या why we doctor advises to take antacids for acidity and indigestion. So this type of questions may be come in the exam. तो क्विकली गो थ्रू करो आप लोग, स्क्रीन पे जो भी टॉपिक्स दिए हैं. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट प्लीज आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स इन क्विकली इन 2 minutes. Okay. ये तो 2 एग्जांपल्स हम लोग ने देख लिए. एक था एसिडिटी वाला टॉपिक और एक था एंड स्टेट. ओके, इसके अलावा और मैंने 3 और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे इलैबोरेट किए हैं. द वन इज सॉइल ट्रीटमेंट. नाउ if we'll see here, soil treatment, acidic or basic nature of the soil affects the yield, right? Soil कैसे होना चाहिए? It will be proper. उसमें ना ही acid content ज़्यादा होना चाहिए, ना ही उसमें basic content. It should be a neutral. तो acidic or basic nature of soil affects the yield as plant do not grow properly on such soils, right? Now to overcome this, acidic soil is treated with slake lime और quick lime, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं. स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड. तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे भी एसिड अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हम लोग को उसमें बेस ऐड करना है. तो जनरली फार्मर्स यूज स्लेक लाइम और क्विक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज द सॉइल. ओके, फिर फैक्ट्री वेस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज आर एसिड. देखो एसिड जो मोस्ट ऑफ दी वेस्ट निकलता है फैक्ट्रीज में से वो एसिडिक होता है. वो कहाँ पे जाता है? पॉन्ड्स में जाता है, रिवर्स में जाता है, विच इज हार्मफुल टू द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज दे पॉल्यूट्स द वाटर. अभी इफ सच दिस एसिडिक वेस्टेज आर फ्लश्ड इनटू द रिवर, तो ऑब्वियसली एसिड ही है. तो टू ओवरकम दिस वी नीड टू यूज सम बेसिक सब्सटेंसेस. Yes, Q, because if such acidic wastes are flushed into rivers, acid present in them kills the aquatic organisms and obviously they will pollute the water. So thus the factory wastes are treated with basic substances to neutralize the acid present in them before being flushed into the river. Okay, और इसके अलावा टूथ डी, ये तो मोस्ट कॉमनली है. एसिड प्रेजेंट इन फूड erodes the protective layer of the teeth. ये तो सब लोग ने मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे हो जाता है. और इसके लिए हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, राइट? टूथपेस्ट में अगर हम लोग इसका कंटेंट देखेंगे, इट विल कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप. द केमिकल ऑफ कंटेन्स द हाइड्रोक्सिल. सो द टूथपेस्ट बीइंग बेसिक न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ. तो ये देखो, ये तीनों एग्जांपल्स भी आप याद रखते हो. तो टोटल वी हैव डिस्कस्ड 5 एग्जांपल्स. एक तो एसिडिटी, इंडाइजेशन एंड स्टिंग, इसके अलावा सॉइल ट्रीटमेंट, फिर फैक्ट्री वेस्ट. तो जस्ट क्विकली नोट डाउन दिस 3 points. See, these are all important questions, important topics from board exam.
ओके नाउ रिलेटेड विद वन एक टॉपिक है यहाँ पे एसिड रेन करके। अभी हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं तो मैं सोचा इसको भी थोड़ा बहुत कवर कर लूँ। तुम्हें पता है कि जो एग्जॉस्ट निकलता है फैक्ट्रीज में विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, these are released also from vehicles, automobiles, chimneys, right? And they mix with the droplets of the rain and turns in the rain water acid. So when this acid rain water falls over the earth, it is known as acid. Acid rain damages the buildings. तुम लोग को पता है ताजमहल का example, and is harmful for the plants as well as for the animals. तो okay, तो अभी तक हम लोग ने जो डिस्कस किया रिलेटेड विद द एसिड एंड बेसिस, यहाँ पे अभी तक हम लोग ने केमिकल रिएक्शंस नहीं देखे, जस्ट द बेसिक थिंग्स हम लोग ने देखे जो थ्योरी टॉपिक्स है एनसीईआरटी की। एसिड बेस के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अलावा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड important things related with the indicators, ये हम लोग ने देखा। ओके नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग ने ऑलरेडी देखे थे, लास्ट क्लास में भी देखे थे हम लोग ने केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड विद इट। यस देखो ये those who were present for the last class, you remember these reactions, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन, फिर हम लोग ने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया था मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन, रिमेम्बर और नॉट? ये ओके और अभी हम लोग ने देखा ये वाला जिसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस के साथ। नाउ इफ विल सी इन दिस केमिकल रिएक्शन, दिस वन which I have already explained you with the 5 examples about acid and bases. Now you know that when any acid when react with base it gives you salt water, right? तो देखो एसिड मैंने जनरल फॉर्मूला बताया है mx और बेस के लिए MOH। H मतलब क्या होता है, जो एसिड में प्रेजेंट होता है, बेस में क्या प्रेजेंट होता है, OH माइनस प्रेजेंट होता है, right? So obviously when acid reacts with the base it will give you what, it will give you the water, that is H2O and MX मिलता है मेटल का सॉल्ट, सॉरी एसिड का सॉल्ट। तो सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ HCl and NaOH। तो देखो यहाँ पे मिला दिस इज HCl, व्हेन इट रिएक्ट्स विद द NaOH क्या होगा HCl और NaOH का रिएक्शन, as per this chemical reactions you will get NaCl plus H2O, right? So this will be the neutralization reaction. So in the exam they will ask you the questions, give an example of neutralization reaction, explain with the help of water, or you can take the explain with the formation of water. Okay, now we need to discuss about the next, that is acid and bases. One of the important property of acid and bases, that acid and bases conducts the electricity. Now you know that acids and bases both conduct exhibit their conductivity, right? देखो यहाँ पे मैं reaction बता रहा हूँ. This is in case of acid. When the acid reacts with the, when any acid reacts with the water, it gives you the hydronium ion and chloride ion. When this acid, when it dissociates, water के साथ react करेगा मतलब क्या होगा, water को dissociate करेगा and it is given you the two radicals, one is called hydronium ion and another one is chloride ion. तो ये जो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन मिलेगा आपको डिसोसिएट होने के बाद, और देखो कंडक्टिविटी के लिए यू नीड दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेबल चार्ज आयंस, राइट? चार्ज आयंस या रेडिकल्स होने जरूरी है। बेस में भी देखो यार ये रिएक्शन, इन केस ऑफ बेस NaOH क्या देगा आपको, NaOH इट विल गिव यू दी
Na plus and OH minus. So Na plus and OH minus is dissociates in water. Both these reactions dissociates in the water. When these reactions dissociate, it produces the ions. When these ions dissociates and separates as in case of HCl and H2O, it dissociates as hydronium ion and chloride ion. And in case of NaOH, it dissociates as Na plus and OH minus. So when these two ions, they produces separately, dissociate separately in the aqueous solutions, and they can easily conduct the solution. So same way you can take an example of common salt. When common salt dissolved in water, if the common salt in solid state, it does not conduct electricity. But it is if it is deep or if it is dissolved in the water, it will give you the dissociation of ions in sodium and chloride, and then it will be conduct the electricity. So just note down these two reactions, then we'll continue. See, these are the two examples. One is for acid and one is for base. Both are important, and which gives you more detail about the electrical conductivity of acid and bases. So if the question is for 2 marks, you have to write the two reactions. One is with acid and one is with base. So if